Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss cardiac diseases in pregnancy. But first of all, we should be knowing what are the physiological cardiovascular changes in pregnancy. The first and foremost change is the increase in cardiac output during pregnancy, and cardiac output increases up to 40%. So in pregnancy, basically peripheral vasodilatation takes place under the effect of progesterone, and in response to that peripheral vasodilatation, systemic vascular resistance decreases, and in consequence, cardiac output increases to combat peripheral vasodilatation and decrease in systemic vascular resistance. So cardiac output, it increases by approximately 40%, and when the cardiac output increases, there is increase in stroke volume and 15% increase in heart rate as well. And one profound effect of maternal position on hemodynamic profile of both mother and fetus is aortocaval compression. That whenever mother is turned from lateral to supine position towards term, there would be 25% reduction in cardiac output and blood circulation to uterus. So uteroplacental circulation and cardiac output is reduced by 25% when we turn the patient from lateral to supine position towards term, or by the end of second trimester from 26 weeks onwards. So this is called aortocaval compression, and this is why that the cardiac patient is not positioned supine during labor. Okay. And there is increased risk of pulmonary edema in pregnancy, because in pregnancy, even in normal pregnancy, there is decrease in serum colloid on cardiac pressure. So the risk of pulmonary edema is increased, and this pulmonary edema precipitates if we increase cardiac preload, if we are giving IV fluids, be it normal saline, dextrose water, ringer's lactate, any type of fluid if we are giving to the patient, or blood, it will increase the cardiac preload and it will precipitate pulmonary edema. Or if there is increase in pulmonary capillary permeability, like when we see in hypertension and preeclampsia, PIH, so pulmonary edema precipitates if we increase the cardiac output in the form of fluids, or if there is concomitant preeclampsia or eclampsia. So these are the normal findings on CVS examination in pregnancy. The pulse would be bounding and collapsing. Ejection systolic murmur is heard in 90% of the pregnant patient. First heart sound would be loud. Third heart sound would be heard. There would be relative sinus tachycardia because of the increase in 15% in the heart rate. Ectopic beats are relatively common, and peripheral edema. Peripheral edema, pedal edema, and edema on the dependent areas of the body. And what are the normal findings on ECG in pregnancy? As there are ectopic beats common, so atrial and ventricle ectopics would be seen in ECG. Small Q wave in lead 3, inferior leads, it is common, and QRS axis leftward shift. ST segment depression is common. T wave inversion in inferior and lateral leads. So Q wave small in lead 3, T wave inversion in inferior and lateral leads, and QRS axis left side deviation, ST depression, and ectopics. These are the normal findings in pregnancy on ECG.
So if we talk about the intrapartum hemodynamic changes, labor is associated with further increase in cardiac output. बेसलाइन कार्डिक आउटपुट जो इंक्रीज हुआ था उससे भी ज़्यादा 15% रेज हो जाएगा इन फर्स्ट स्टेज, 50% in the second stage, and 60 to 80% in the third stage of labor. So the uterine contractions during the first stage of labor, what they cause autotransfusion of about 300 to 500 ml of blood into circulation. This leads to the increase in preload and cardiac output. Pain and anxiety further elevate heart rate and blood pressure. So if we control pain and anxiety of the patient, heart rate would be controlled, blood pressure would be controlled, and there are less chances of deterioration of the cardiac patient in labor, because labor is associated with further increase in cardiac output. 15% in the first stage, 50% in the second stage, and 60 to 80% in the third stage. Postpartum hemodynamic changes are very important as cardiac output rises by 60 to 80%, and this rise is due to the relief of inferior vena cava obstruction and uterine contractions. So as the baby has been delivered by this time, जो पहले obstruction थी inferior vena cava पर, mechanical जो pressure था due to the pregnant uterus वो relief हो गया. दूसरा जो हमने बात की थी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो है वो 300 to 500 ml blood is being shifted to the maternal circulation. ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. जो प्लेसेंटा था वो डिलीवर हो गया है. जितनी भी यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये वापस शिफ्ट हो रही है मैटरनल सर्कुलेशन की तरफ. सो बाय द रिलीफ ऑफ inferior vena cava obstruction, by the mechanical प्रेशर ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस वो रिलीफ हो गया है. और दूसरा जो प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई है उसके बाद यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जितनी भी थी वो ट्रांसफ़र हो गई है मैटरनल सर्कुलेशन की साइड पर. तो कार्डियक आउटपुट वुड राइज बाय 60 to 80%. सो एंड रैपिड डिक्लाइन टू प्री लेबर वैल्यूज विद इन 1 hour of delivery is occurring. So at one time there is marked increase in the cardiac output, and on the other hand rapid decline to the pre-labor values within 1 hour of delivery is occurring. So the women with cardiovascular compromise are most at risk of pulmonary edema during second stage of labor and immediately postpartum due to these effects. So in the pre-pregnancy counseling, we have to tell mother that the risk of maternal death and high mortality is there because of her cardiac condition. Even if the cardiac condition is trivial, we cannot tell the patient कि आपकी अगर बहुत serious condition है तो you are going to die. Even in minor cardiac condition, there are chances of maternal mortality. So we have to explain this to the patient. And possible reduction of maternal life expectancy, especially if she is having some grave cardiac condition. Effect of pregnancy on cardiac disease जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि cardiac output इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. जो है अब कार्डियक डिजीज़ के क्या इफ़ेक्ट होंगे फीटस पे वो भी आपने उसको बताने हैं, क्योंकि चूँकि कार्डियक डिजीज़ की वजह से पेशेंट को साइनोसिस डेवलप हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट उसका इंक्रीज़ हो सकता है. इस वजह से जो बेबी है उसको हाइपॉक्सिया होगा. हाइपॉक्सिया की वजह से पेशेंट का प्री टर्म लेबर होने के चांसेस हैं, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के चांसेस हैं, एंड congenital heart disease के chances हैं if the mother has the disease that is not rheumatic in origin but of congenital cardiac heart disease. So if the mother is having congenital cardiac heart disease, this disease can be shifted or can be transferred to her baby as well. And under the effect of cardiac disease, the fetus can have fetal growth restriction and preterm labor. Intensive maternal and fetal monitoring need during labor, and other options
contraception and adoption can be discussed, especially if the cardiac condition is so grave that pregnancy is contraindicated in them, like severe cyanotic heart disease, severe mitral stenosis, severe aortic stenosis, and severe pulmonary artery hypertension, और aortic root dilatation more than 4 centimeters. तो अगर ये चीज़ें हैं पेशेंट को और ग्रेव कार्डिक कंडीशन है तो वी हैव टू एडवाइस द पेशेंट फॉर कॉन्ट्रसेप्शन एंड अडॉप्शन एंड अगेंस्ट प्रेगनेंसी. And timing of pregnancy should also be explained to the patient. Antenatal management we would involve multidisciplinary team approach, and we would involve cardiologist in our treatment and management. And we have to first of all take the history from the patient. If she has been experiencing any type of breathlessness at lying down, orthopnea, any change in her heart rate or rhythm, any increase in tiredness or reduction in exercise tolerance, or palpitations, edema, chest pain, syncope, cyanosis, etc. And routine physical examination, we have to give emphasis on pulse rate, rhythm, volume, character, blood pressure, JVP, heart sounds, basal crepitation, and we have to look for ankle and sacral edema. अब ये फैक्टर्स अगर पेशेंट में प्रेजेंट हैं तो देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इन प्रेगनेंसी. एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और factors that are increasing heart rate, be it fever, be it infection, be it anemia, pain related stress, tocolytics, ये क्या कर रहे हैं? ये हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, और जो ही हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो कार्डियक डीकम्पेंसेशन हो रही है. So infection, fever, thyroid disorders, anemia, tocolytics, pain related stress, all of these are increasing the heart rate and consequently cardiac decompensation. Okay, so respiratory and urinary tract infections, anemia, tocolytics, pain related stress, we have talked already about that. Fluid overload, हमने बात की थी कि ये preload increase करेगा, और preload जब increase होगा तो pulmonary edema precipitate हो जाएगा. Arrhythmias, पहले ही rhythm ठीक नहीं है. If patient is experiencing arrhythmias or hypertension, corticosteroids should be used judiciously in these patients for fetal lung maturity, and obesity itself is a risk factor for cardiac disease. We should be knowing कि patient का cardiac status क्या है according to the New York Heart Association classification. So इन्होंने describe किया है कि 4 grades हैं जिसमें हमने patient को stratify करना है. Grade 1 is no limitation of physical activity, normal patient है. 1, 2 जो है वो mild forms हैं, 3, 4 severe forms हैं. तो इसमें कोई limitation physical activity की नहीं है, and ordinary physical activity patient करिए तो कोई fatigue, palpitation, dyspnea, angina कुछ भी नहीं हो रहा है. Mild जो grade 2 है उसमें slight limitation है physical activity की. The patient is though comfortable at rest, but ordinary physical activity results in fatigue, palpitations, dyspnea, angina, etc. The sign and symptoms of cardiac disease. Moderate में marked limitation of physical activity, grade 3 है. Comfortable at rest but less than ordinary activity means going to the washroom causes fatigue, palpitation or dyspnea. Severe, unable to carry out any physical activity without discomfort as the symptoms are present at rest. If any physical activity is undertaken, discomfort is increased. So grade 3 and grade 4 of New York Heart Association classifications are high risk, जिसमें marked limitation है और symptoms are present at rest हैं. तो अगर इस grade में patient fall कर रहा है तो patient is more likely to have complications. तो हमने ग्रेड कर दिया पेशेंट को कि वो किस ग्रेड में है. These are the Toronto risk factors for maternal cardiac complications. हम इससे एंटिसिपेट कर सकते हैं
कि अगर ये 4 पॉइंट्स पेशेंट में हैं तो मदर को कार्डिक कॉम्प्लिकेशन के कितने % चांसेस हैं। अगर उनको कोई कार्डिक इवेंट हुआ है प्रायर, हार्ट अटैक हुआ है या कार्डिक एरिथमिया हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, कोई भी कार्डिक इवेंट हुआ है तो उसका 1 पॉइंट है। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, आई टोल्ड यू 3 and 4 आर हाई रिस्क और साइनोसिस is awarded 0.1. Valvular and outflow tract obstruction is also awarded 0.1 and myocardial dysfunction अगर है, fractional shortening नहीं है या myocardium जो है वो dysfunction है तो उसमें भी 1 point है। अगर कोई point इसमें से नहीं है तो still there are 5% chance कि maternal cardiac complication can still arise in a patient। ठीक है, 0 point है अगर, तो फिर भी 5% chances हैं कि patient can develop cardiac complication. If 1 point is there out of these 4 points, there are 37% of chances of cardiac complications, and if there are more than 1 points, then there are 75% chances that the mother will develop cardiac complications. So these are the high risk cardiac conditions. Pulmonary hypertension, ये थोड़ी सी मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। Cyanotic congenital heart disease, history of arrhythmias, heart failure, spontaneous bacterial endocarditis, thromboembolic event, myocardial dysfunction जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30% हो, या न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन में ग्रेड 3 या 4 है। लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन और न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन 3-4 ये मायोकार्डियल डिसफंक्शन में आते हैं। हार्ट फेलियर, एरिथमिया, साइनोटिक हार्ट डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एओर्टिक पैथोलॉजी, डायलेटेड रूट है, डायलेटिक एओर्टिक रूट, मार्फन्स डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लीजन्स, एओर्टिक and mitral stenosis, prosthetic heart valves, especially if they are of metal, and previous peripartum cardiomyopathy. ये सारे हाई रिस्क कंडीशंस हैं और अगर ये इतनी सिवियर हैं तो इवन प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दीज कंडीशंस। अब फीटल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी टू मैटरनल कार्डिक डिजीज, रिकरेंस हो सकती है, द फीटस कैन इनहेरिट congenital heart disease from mother, maternal cyanosis की वजह से fetal hypoxia होगा जिसकी वजह से prematurity, preterm labor और fetal growth restriction के chances होंगे, और if the mother is taking any kind of drugs like warfarin तो teratogenesis होगा, fetal growth restriction के chances further हो जाएंगे, fetal loss can also occur. So if we talk about specific conditions, cardiac conditions, mitral and aortic stenosis, these are the obstructed regions of the left heart that result in inability to increase in cardiac output to meet the demands of pregnancy. अब हमारा तो cardiac output हमने कहा था कि बहुत increase हो रहा है, peripheral vasodilatation की वजह से भी increase हो रहा है प्रेगनेंसी में, फिर फर्स्ट स्टेज में 15%, सेकेंड स्टेज में 50%, थर्ड स्टेज में 60 to 80%। तो कैसे कोप करेगी माइट्रल एंड एओर्टिक स्टीनोसिस की पेशेंट जिसके वैल्व्स पहले ही स्टीनोज्ड हैं और कार्डियक आउटपुट मेंटेन कैसे होगा? एओर्टिक स्टीनोसिस जो है वो ज़्यादातर कॉन्जेनिटल होता है, माइट्रल स्टीनोसिस ड्यूमेटिक ओरिजिन का होता है, ये एक्वायर्ड होता है। Mitral and aortic stenosis, the aim of medical treatment is to reduce the heart rate. Heart rate increase हुआ वह होगा इनमें, तो इसको हमने डिक्रीज़ करना है। जब कार्डिक हार्ट रेट हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो कार्डिक फिलिंग इंक्रीज़ होगी डायस्टोलिक फेज में। जब कार्डिक फिलिंग इंक्रीज़ होगी तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज हार्ट रेट के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इनएफिशिएंट होगा और कार्डिक पंपिंग भी इनएफिशिएंट होगी। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू डिक्रीज द हार्ट रेट एंड अचीव दैट कैन बी अचीव थ्रू बेड रेस्ट। ऑक्सीजन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर एंड डायजूरेटिक थेरेपी। डायजूरेटिक थेरेपी हम क्यों दे रहे हैं? ताकि प्री लोड उसका इंक्रीज ना हो, प्री लोड डिक्रीज रहे उसका, और प्री लोड डिक्रीज रहेगा तो जो हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है
वो ज़रा बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकेगा, जो भी डिक्रीज प्री लोड को वो बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकेगा, और कार्डिक फिलिंग और पंपिंग बेटर वे में हो जाएगी। ओके, अगर तो माइट्रल स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट ऑक्सीजन, बेड रेस्ट, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक थेरेपी से नहीं कंट्रोल हो रही और पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है या जो है उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसका जेवीपी इंक्रीज हो रहा है, तो देन balloon mitral valvotomy is the treatment of choice after delivery, but also be considered in pregnancy depending upon the clinical condition and gestation. Marfan's disease की हमने बात की थी, very dangerous condition. This is autosomal dominant connective tissue abnormality that may lead to mitral valve prolapse, aortic regurgitation, aortic root dilatation, and even aortic rupture or dissection. Echocardiography is the principal investigation as it is able to determine the size of aortic root. तो मार्फन्स डिजीज़ में बेसिकली ज़्यादातर एओर्टिक रूट की डायलिटेशन होती है. जब डायलिटेशन हो जाती है तो रिगर्जिटेशन हो जाती है, और एओर्टिक रप्चर, डायसेक्शन आर कॉमन. मार्फन्स सिंड्रोम, women with aortic root dilatation of more than 4 centimeters are at greater risk, so this is also a contraindication to pregnancy. What are the obstetric complications with Marfan syndrome? Pregnancy loss, preterm labor. Marfan syndrome आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो उसकी वजह से सर्वाइकल वीकनेस, यूट्राइन इन्वर्जन और यूट्रस के मसल्स में जो है वो इतना कॉम्पिटेंस नहीं होता, उसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो जाती है या पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. Endothelin blockers, bosentan or phosphodiesterase inhibitors such as sildenafil can be used in cases of severe origin. Pulmonary hypertension is characterized by increase in pulmonary vascular resistance. Pulmonary vascular resistance अगर हो गई तो oxygenation नहीं होगी blood की, resulting in an increased workload placed on the right side of the heart. Symptoms are fatigue, breathlessness, syncope, and clinical signs are those of right heart failure as well as cyanosis. High risk of maternal mortality, 30 to 50% in women who choose to continue their pregnancy. Pregnancy termination indicated है इसमें, but in women who choose to continue their pregnancy despite of the high risk of maternal mortality, targeted pulmonary vascular therapy is an option. So the treatment of cardiac disease, anticoagulation is essential in patient with congenital heart disease with pulmonary artery hypertension. आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स जो होते हैं आपको पता है उसमें एंटीकोagulation देते हैं. एट्रियल फिब्रिलेशन में हम एंटीकोagulation देते हैं क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हार्ट इज़ नॉट पंपिंग द ब्लड एफिशिएंटली. उसकी वजह से ब्लड स्टेसिस हो जाता है एट्रिया में. जब ब्लड स्टेसिस हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो इस वजह से इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में हम देते हैं एंटीकोagulation, आर्टिफिशियल वाल्व्स में देते हैं, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, साइनोसिस है, उसमें भी देते हैं एंटीकोagulation. और एंटीकोagulation में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इज़ ऑफन यूज्ड, और वारफरिन भी यूज़ करते हैं. But you know that there are risks of warfarin embryopathy specifically during 6 to 13 weeks of gestation. So if the mother is really at risk, तो कभी कभी हम ये करते हैं कि 6 वीक्स से पहले उसको वारफरिन कंटिन्यू करते हैं, 6 to 13 वीक्स के दरमियान उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे देते हैं, और 13 वीक्स के बाद दोबारा से वारफरिन दे देते हैं. लेकिन द बेस्ट अप्रोच फॉर द प्रेगनेंसी इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, बट इट इज़ डेंजरस फॉर द मदर, उसको रिस्क हो जाएगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का. Echocardiography is non-invasive and useful in its ability to serially assess functions and valves, and an echocardiogram at booking visit and at 28 weeks is usual. तो हमें पता चल जाएगा कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं. सीरियली भी हम बार बार भी करवा सकते हैं, देख सकते हैं, but at booking visit and at 28 weeks it is
necessary to do echocardiography. अब लेबर मैनेजमेंट कैसे होगी? पेशेंट को जो है ना, हमने इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा एंजाइटी होगा, ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज होगा. सेकेंड, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. ये हम देते हैं उन पेशेंट्स में जो हाई रिस्क होते हैं, लेकिन हमारे सेटअप में वी गिव इट टू ईच एंड एवरी कार्डिक पेशेंट. एम्पिसिलिन इंजेंटा. एंश्योर फ्लूइड बैलेंस. बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, प्रीलोड इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा. सुपाइन पोजीशन अवॉइड करनी है टू कम्बैट द रिस्क ऑफ एओटोकैवल कंप्रेशन. क्योंकि हमने बात की थी कि जब लैटरल पोजीशन से पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे हम टर्न कर रहे हैं नियर टर्म, तो उसका कार्डिक आउटपुट एंड यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन 25% रिड्यूस हो रही है. रीजनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया हमने डिस्कस करना है विद एनेस्थेटिस्ट. वी हैव टू कीप द सेकेंड स्टेज शॉर्ट, क्योंकि उसमें कार्डिक आउटपुट 50% इंक्रीज हो रहा है. पेशेंट को पेन है, एंजाइटी है, टेकिकार्डिया है, तो पेशेंट डिकम्पेंसेट कर सकती है. सो वी हैव to even apply forceps to reduce the second stage of labor. And मिथर्जिन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है पेशेंट को. सिंटोसिनॉन इन्फ्यूजन फॉर्म में हम जुडिशियसली दे सकते हैं, बट वी नो दैट सिंटोसिनॉन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लूइड रिटेंशन. ठीक है. और साइटोटेक भी हम जो है हम पर रेक्टली डाल सकते हैं, बट जुडिशियसली. अच्छा, वन मोर पॉइंट I want to emphasize on the risk of mitral stenosis. Mitral stenosis में बेसिकली क्या होता है कि ब्लड पंपिंग नहीं होती है लेफ्ट हार्ट से. तो लेफ्ट हार्ट से ब्लड पंप नहीं हो रहा क्योंकि माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है. तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो कार्डिक आउटपुट उसका बहुत कम होगा. दूसरा क्या होगा कि जब हार्ट में, लेफ्ट हार्ट में ब्लड स्टेसिस की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, पल्मोनरी एडीमा ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक फेलियर ज़्यादा हो जाएगा. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स दैट वी इनकाउंटर स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स ऑफ mitral stenosis. So these are the approximate mortality ratios in pregnancy. Severe aortic stenosis 1 in 100, pulmonary artery hypertension में बहुत ज़्यादा है 30 to 50%. Eisenmenger syndrome, इसमें भी प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. The risk is 1:2, मतलब 50%. Cardiomyopathy 10 to 50%. These are the approximate mortality rates in pregnancy. Thank you. Okay, one more thing. Cardiac disease in pregnancy is very important from your examination point of view. इसमें हम आपसे लेबर मैनेजमेंट पूछ सकते हैं. पेशेंट की काउंसलिंग स्टेशन आ सकता है आपको. और जो है precipitating factors, New York Heart Association classification, these are very important. Okay, thank you.